Ok, buenas tardes todos. ¿Cómo estáis? Am I Muy audible? bien. Yes, you are. Profesor, Buenas tardes. ¿Todo bien? somos bien. ¿Y tú? No, we'll say estamos bien. We never say Ah, somos. sorry. ¿Vale? Estamos bien. Vale, entonces, ¿habéis hecho los deberes? Have you done the homework? Was there any means the revision or did you do anything? Any doubts? Then we Yes, can. sir. Yes, please. One by one, you may go ahead. Sir, I'm getting a bit confusion in superlatives and igualdad. Okay, you're getting a bit confused in superlative and igualdad. Okay. We were on block 3, 2. Sir, we were on 2. 7. Okay. Like we were about to end the 2. Okay. Give me a second. Unit 7, we have completed almost. And we are about to move to Unit 8. Perfect. No issues. So what is the issue? Sir, actually, like I'm unable to frame sentence properly. ठीक है. Anyone else? Which block are you seeing? 2 or 3? Sir, 2. I guess let's do this question. I guess ये question करेंगे तो हमें सब हो जाएगा. I'll tell you which question I'm talking about. Let's do this. Activity 2. So page number Page number 35. 35. Wait. 99. 99. Okay. Let's go ahead. We may discuss this. Okay. Will you be typing the answers or speaking up, or how do we do it? So let's speak. Okay, vamos a hablar primero. Jorge y Fermin. So there are two people, Jorge and Fermin, and we have to, the adjective that we have to compare is delgado. Now, delgado means thin. Fast. Okay. Thin or fast? Gordo matlab fat and delgado. Got the fact. Okay, sir. So please go ahead. Anyone? Sir, Jorge es más delgado que Fermin. Que Fermin. Okay. So the sentence can be Jorge es más delgado que Fermin, or you can also write Jorge, Fermin es menos delgado que Jorge. Okay. Totally up to you. There's nothing is given, so we can make any sentence. Next, Camila Años and Florencia Años and Coven. So you may make a sentence. Coven means young. Sir, here Anya says is their surname or like something else? Años, they should have given the age, I guess, कि कितनी age है उनकी. तो वहाँ पे अगर 6 ले लो और वहाँ पे 8 ले लो, ऐसा कुछ कर लो. Okay. Camila S. Jove S. Coven. Mas and Okay, so let's understand. Mas Coven कुछ नहीं होता है. Coven का जो होता है वो मायोर होता है. Okay. Coven is young and Coven is young. So what we'll use? We'll use menor. Menor means younger. Okay. Same goes for Adriana and Santiago. Suppose Adriana is mayor que Santiago is elder than Santiago. Okay.
Next one is Mateo Okay, and sir. Elisa desordenado. Okay, let's do question number 4. काफी अच्छा क्वेश्चन है. Sir, what is desordenado? बताएंगे anyone what is desordenado? I guess जो हमने adjectives पढ़े थे उसमें था ये. Unorganized. Okay. Okay. Please tell me the answers. Sir, Mateo es menos desordenado que Elisa. Okay, that's fine. But what if we want to say the other person first and the other person later? How will we say that? Alicia es menos desordenado que Mateo. Okay, is he right or wrong? Elisa, सर स्टार्टिंग वाला मास बोला था या मेनोस बोला था, मैंने ठीक से सुना नहीं था इसलिए. No, it doesn't matter. sir, March menos कुछ भी हो सकते हैं. I'm saying the person comes first and then the other person goes at the back. Yes, sir. तो कैसे sir, बोलेंगे? Elisa es ordenado que Mateo. ओके, तो बस यही समझना था, यही मिस्टेक आई वाज एक्सपेक्टिंग और यही मिस्टेक हुई है. तो यहाँ पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एलिसा फर्स्ट, तो हम लिखेंगे एलिसा एस मास डेस और दे नादा. व्हाई डेस और दे नादा? Because Sir, female. female is बिकॉज वो फीमेल है. ओके, सो द आंसर वुड बी एलिसा एस मास डेस और दे नादा के मातेओ. वहां डेस और दे नादो नहीं आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिसा फर्स्ट. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. Perfect. Yes. Next. Montserrat, I guess name again. Lucas again name. Ojos grandes and ojos grandes. Both have big eyes. तो यहाँ पे तो I guess Sir, I'll do it. Sir, Montesar, Montesart. Sir, can you tell the pronunciation? हाँ Montserrat. Montserrat um, tiene tan ojos grande. नहीं, tiene ojos tan grande como. So tan is as, grandes is adjective, and then como is again as big as. Montserrat tiene ojos tan grande como Lucas. Lucas, perfect. Clear? कुछ clarity आई? Yes, sir. Let's do more of let's do this. Let's compare Alvaro and Thomas. Sir, Alvaro es menor joven que Tomás. Wait. Okay. दोबारा बोलेंगे. Alvaro es menos. Menor. अच्छा, so let's understand. जब हम तो एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, जैसे गुड बेटर बेस्ट में बुएनो मेखोर ईएल मेखोर होता है, वैसे ही यंग यंगर एंड यंगेस्ट एंड ओल्ड एल्डर एंड द एल्डेस्ट कैसे होता है? खोवेन मास खोवेन की जगह क्या हो जाता है? मेनोर एंड एल मेनोर. और विएको इज ओल्डर मीन्स ओल्ड, देन एल्डर हो जाएगा मायोर एंड एल मायोर. ओके, सर इसमें मेनोर ओपन नहीं आएगा, सिर्फ मेनोर आएगा. हाँ, Okay. मास और मेनोस वाला फंडा हट जाएगा. And नेक्स्ट sir, similarly, जैसे यहाँ पर desordenado है, इसमें हम अपने क्या मीनिंग था सर इसका? अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज, तो इसमें ऑर्गेनाइज लिख देंगे ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं.
नहीं, बट जब उस वाले एडजेक्टिव की बात हो रही है तो हम उस एडजेक्टिव की बात करेंगे ना. Okay. ही इज सर लेजी ये को हम सेंटेंस बोलेंगे. कुछ गो अहेड. ये सर ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन सकता है कि एल एलवारो टेंगा tiene tenga कुछ cuatro अलग होता tien है, बट sorry tiene. tiene Alviro tiene 4 años más que Tomás. देखो आप लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप बोल रहे हो दैट अल्वारो हैज 4 years मोर और इज 4 years मोर देन दिस. नहीं, आप समझेंगे, जब हम Yes तेनेर sir. आन्योस बोलते हैं तो इट मीन्स हम उसकी एज बता रहे हैं. तो हम बोल रहे हैं अल्वारो tiene 32 años, मतलब अल्वारो इज 32 years ओल्ड. तो इसमें हम एल्डर और यंगर से ही कंपैरिजन करेंगे, वो बेटर रहेगा. आप ये मतलब यू मींस वी नेवर से कि ही इज 4 years elder to him. Okay, you can say like that also, but उसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे ना. कंपैरिजन तो हम बोल रहे हैं भाई ये उससे बड़ा है, सिंपल. कितना बड़ा है वो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. Okay sir. बट वही, वहां पे हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं. बट इफ यू राइट दैट ही इज 4 years elder टू हिम, तो वहां पे हम फिर नाउन की कंपैरिजन करेंगे. नाउन क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स. Okay. Number of years जैसे 4 जैसे 4 हो 4 years, गया. हाँ, वी कैन डू इट, चलेगा. Okay. बट देन बेटर इज हम लोग एल्डर और यंगर भी बात कर लेते हैं, if not specified that how many years or something like this. Okay, now mido and mido. What is medir? The verb is medir. So I guess height. Hmm? Height. Height means the measurement. Okay. Okay? When we talk about the measurement, vertical measurement of a person, we use the word medir, and mido means this person height is 1.85 and this is 1.8. So we can say Alvaro es más alto que Tomás. What we can say? Alvaro es más alto que Tomás. Huh. It means Alvaro is taller than Tomás. Clear? Next, a peso is 75 kgs and 80 kgs, means 75 kilos and 80 kilos. So what we can say? We can use the verb pesar. Pesar is the verb. To weigh. कितना weight है? हाँ, Álvaro pesa I mean, 75 menos, no, less. Menos que menos Tomás. que peso. तो यहाँ पे आपने verb compare करिए. Okay. Next. Tomás trabaja más Que Alvaro. Okay. que Álvaro. Or Thomas, or we can say Alvaro trabaja menos que Thomas. He works less than Thomas. Next is soy romántico, cariñoso y sociable, soy algo frío. तो ये तो अब we are talking about the nature of that person कि वो कैसा है. You can say he's more romantic than him, he is more caring than him, he is more social than him, and he is not at all less करके कर लेंगे. Soy algo frío. Very cold person, थोड़ा सा cold person. मतलब ऐसा रोमांटिक, केयरिंग और सोशल नहीं है. नेक्स्ट इज लेओ मुचो लेओ पोको. तो यहाँ पे अब हम वर्ब कंपेयर कर रहे हैं. सो प्लीज लेट्स मेक द सेंटेंस. हेयर वी आर कंपेयरिंग द वर्ब कि वो ज्यादा पढ़ता है और वो कम पढ़ता है. Tomás les. लेस नहीं, ले. थर्ड पर्सन Tomás ले. Álvaro lees mucho मास. más. मास के Más थॉमस. que Tomás. एग्जैक्टली, अल्वारो ले मास के थॉमस. परफेक्ट शालिनी. और वी कैन ऑल्सो से तोमास ले मेनोस के अल्वारो. आई रिपीट, तोमास ले मेनोस के अल्वारो. थॉमस अल्वारो से कम पढ़ता है. सर लास्ट में लैंग्वेजेस का कंपैरिजन हो जाएगा. हाँ, तो इसको अब इसमें हम क्या करते हैं? Álvaro habla más हाँ, अब lengua que मास लैंग्वास, लैंग्वा नहीं, más मास lenguas लैंग्वास. और idiomas que Tomás. परफेक्ट. सो हेयर वी आर कंपेयरिंग द नाउन्स. क्लियर? लास्ट वाले में हमने नाउन्स कंपेयर करी. नाउन क्या है? नाउन इज द लैंग्वेज. नेक्स्ट, हुआ कुछ क्लियर? और Sir, I have a sentence with superlative. प्लीज गो अहेड. Tú eres el menos triste de la clase.
porque tienes el más puntaje puntaje en el examen. हाँ puntos भी लिख सकते हैं porque Okay. tienes menos puntos en la clase means you have the least score. Okay, let's move ahead. So can someone read this comprar or alquilar? So buying or renting. Can someone please go ahead and read something about how does the uh, real market works there in terms of buying land and renting it out or renting? Because I'll tell you what happens in Spain. So there are very like I guess I told you yesterday also or day before that the like I won't say majority but a lot of population of Spain is too old, so they have got big houses. So what they do is they rent out a room or two to the students, or if not to students then the tourist also. समझ रहे? तो जैसे एयरबीएन में ही डाल दिया अपना घर, उसमें 2 रूम्स डाल दिए. तो ऐसा रेंटिंग का काफी ज्यादा सिस्टम है स्पेन में. इट्स नॉट टू कॉमन इन इंडिया बिकॉज सपोज यू गो टू एनी प्लेस you will find it better to stay in a hotel than to stay in a home. But there it doesn't work like this. There people prefer staying with the family or taking a room on rent with the people in their home and live there than going to like general people. I'm not about the top 20% of the people, but that's the average or the common thing because people roam around a lot. वहाँ पे लोग काफी ज्यादा घूमते हैं. Every weekend they have to go somewhere. It's like a means a thing there. Ritual. It's a ritual. It's a thing there. That's I will say that's the fashion now. Everyone has to go somewhere during the weekend. Okay. Okay, and why so? Because they don't need a passport to travel to other Schengen countries. Schengen countries, I guess there are around 24 or 21, something like this. I'm not sure about the number. So Uh, 26. 26. So I don't know. Usme, I guess there was one country which was what I guess Ukraine. I'm not too sure which one it was. That they wanted to come or not. They have some other visas things also. So they can. हाँ, so what those country do is they give a common visa. तो अगर आप ने फ्रेंच एम्बेसी से फ्रांस जाने का वीजा लिया तो आप फ्रांस जाने के बाद स्पेन भी जा सकते हैं, पोर्चुगल भी जा सकते हैं, जर्मनी भी जा सकते हैं, पोलैंड भी जा सकते हैं, एंड ऑल दीज कंट्रीज. ओके, आई होप इट्स क्लियर. आई डोंट नो, हैव यू सीन द बॉर्डर्स ऑफ दीज कंट्रीज? Yes, sir. सबने देखा है. तो इफ यू पे अटेंशन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्री, सो यू कैन जस्ट बाइसाइकिल और यू कैन वॉक थ्रू. आप पैदल जा सकते हैं. इनके कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं. मोस्टली बॉर्डर्स तो ऐसे ही है. So if you see the borders of Belgium and Netherlands, you see the borders of Germany. Okay, you see the borders And of Switzerland. Finland, Finland, sir. Spain So and islands भी बटे हुए हैं वो छोटे छोटे से. हाँ, तो मैं तो Sir, कह रहा हूँ Germany and Switzerland. चलो ये सब तो थोड़े वो है. आप स्पेन और पोर्चुगल का ही बॉर्डर देखेंगे, यू कैन वॉक अक्रॉस. आप साइकिल करके पैदल जा सकते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स बिकॉज so I'll tell you that's the reason कि language वहाँ काफी ज्यादा अच्छे से फैल जाती है because someone from Portugal can go to Spain and work there. So once he go there, obviously he'll be speaking Portuguese also and Spanish also. So that's why lot of people speak lot of languages there. As a single or like if I'll say unilingual people कम होंगे, जो एक language बोलते हैं. Multilingual people would be more in number if you talk about Spain, France, Germany, all these countries. Okay, so can someone please give it a read? May I? Yeah, anyone, please go ahead. Buying comprar a house is one of the main needs and concerns among Spanish citizens. Prices precios are generally high, but usually people prefer buying comprar their house rather than renting alquilar rather than renting it. It is considered an investment for the future. However, this depends on the fact if one is employed or not, and also on the country's economic situation. Due to these two reasons, today the number of rented properties in Spain have increased, with almost 14% of the population living in a rented house. Land price in cities, ciudades, is higher than in small localities or villages, pueblos. Pueblos. This pueblos.
This, added to an urban planning prioritizing multi-story buildings, makes people in cities to live in more affordable flats, pisos, or apartments, apartamentos, unlike people in small localities where house casa prices are lower. Hmm. It is it is also very common that many Spanish people have a second house for weekends, casa de fin de semana, and summer holidays, casa de verano, Verano. mostly verano, mostly among people living in cities. This accounts for 36% of Spanish households owning a second property in rural areas or small villages. University students living far from their family home usually share rented apartments where each tenant inic- In inquilino inquilino. inquilino Hmm. inquilino pays the rent for the individual room and they share household expenses, compartir gastos domésticos. In Spain, it is not common to share bedrooms, When renting. habita, habit, Habitaciones. hab, habitaciones when renting. Sometimes young professionals also share apartments to reduce individual expenses. Normally, Spaniards do not like to move into new house, cambiar de casa, mudarse. This is the reason why buying is the first option for most of them who can afford it. Okay. Now, before Now going to moving the, on, let's look at the vocabulary used when we talk about the buying or renting the house. So it says comprar means to buy, vender means to sell, alquilar means to rent. Un piso, piso हो गया flat, apartamento हो गया एक apartment, और una casa हो गया एक house, a bungalow kind of a thing, means proper house. Then a buscar piso means to look for a flat, or alojamiento means accommodation, to look for an accommodation. Next is vivir en un piso, to live in a flat. Vivir en un apartamento, to live in an apartment. Vivir en una casa is to live in a house. Next, compartir piso, to share a flat. Cambiarse de casa, to change the house, और इसको हम मुदार से ही बोलते हैं. Okay. Next is propietario means the owner. It's a proprietor word से आया ये. Casero is the landlord. Okay. Casa से आया casero, जिसका घर है वो ऐसे मकान मालिक. Then next is inquilino is a tenant, जो जिसको रखा गया है. And yes, you can read it super fast that according to the number of room, regardless of how big it is, the biggest group in Spain, more than 30%, is formed by the household with 5 rooms, 5 kamre. The most common size being between 75 to 90 meters square. Usually, common spaces are the living room, which is known as salon. Cocina is kitchen. Then we have got cuarto de baño, bathroom. And then if the place is big enough, then there are enough rooms that each child have their own bedroom. So bedroom would be dormitory also. And in Spanish homes, it is not common for people of different generations to share bedroom. Some bigger houses or some smaller families have a study also, which is known as estudio. So okay, I guess would you want to do this activity, or you can do it at home? So these are the things that you have to mark in this map. नीचे एक map है, there is a map given to and you have to mark कि भाई कौन सा स्टडी रूम है, कौन सा फ्लैट है, कहाँ पे कौन सी जगह है, ये एल पासियो मीन्स पैसेज कौन सा है, और तेरासा टेरेस कहाँ पे है. So you have to mark all this. So you can do it at home. Now let's do this. This is super good. You want to read, or just you can go through it and ask me the words that you don't know or don't understand? Chicos, you want to read it, or you just give it a read एकदम ऐसे फटाफट? Read. I Silent. lost the doubt. so we Okay. can read. Okay, we can read. Okay, then you go ahead first. So we have got 4 of them. So I'll tell you how it works. There's this information given about Lena. Lena is this girl, and there are 3 ad given of the homes. Means कोई किसी को, I guess they are looking for uh, a flatmate. Let's see, it says Lena has just moved out to Madrid for study purposes. She is looking for a room to rent in a shared apartment. So नीचे 3 advertisement है. You have to choose which is the best room for her. उसके लिए सबसे best room कौन सा है. So let's give it a read and
You may ask So anything that you do. from dialogue of ए बी सी नीचे लिखा है ना, ए बी सी में से तीन एक चूज करना है. ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी इज अ स्टूडेंट और व्हाटएवर. उसके लिए बेस्ट घर कौन सा लगेगा, टू चूज दैट. सो प्लीज रीड. sir in class or like हाँ, self राइट read? नाउ अभी अभी रीड करते. Okay, me llamo Lena, tengo 23 años y soy estudiante de arquitectura. Busco una habitación para alquilar en un piso compartido. compartido. So compartido मतलब comfortable. नहीं, compartido means shared. Ah, Shared. yes. Sharing, compartido होता है to share. Con otras chicas estudiantes más o menos de mi edad. Busco una habitación luminosa. So what is What is luminosa? luminoso? Luminoso is illuminated means lighted, जहाँ पे अच्छे से लाइट आती हो. Okay, sir. Amuebla, amueblada हाँ, amueblada means furnished. y de tamaño मेडियानो, तमान्य होता है साइज, मेडियानो मींस मीडियम, मीडियम साइज का घर चाहिए, ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा भी नहीं. grande और en बिग. un piso tranquilo. ट्रांकिलो मींस काम, शांति वाला घर चाहिए. ऐसा Okay. नहीं कि मींस काफी ज्यादा इश्यूज है. Cerca de la ciudad, city circle में. Cerca de la ciudad universitaria y bien comunicado means near to the universe, like the city university campus के पास, and uh, well connected. And this is the telephone number. So now you can read all these three and tell me the answer, which is the best home for her. You can do it on your own now. Sir, second one is better. So B. Yes, sir. B. Anuncio dos. Sir, because the first one here is a boy and the third one it's a student. We read the second one till last. The description matches to the one Okay, name Rohit, she please gave. mute. Rohit, please mute. Okay, I was talking, realizing. Okay, so the second Anuncio those like the second home looks better for her. Yes, sir. The reason it says somos tres chicas, we are three students or three girls. De enfermería. What is enfermería? Economy का? Nursing. हाँ, Nursing, sir. nursing and economic. एक्चुअली हम अगर स्टार्टिंग लाइंस देखे तीनों की तो वो सेकंड वाला वैसे ही आ जाएगा. हाँ, because the age is between 22 and 25. नहीं But सर, then फर्स्ट वाले में बॉय है एंड थर्ड वाले में वो स्टूडेंट नहीं है. okay, ठीक है. But वहाँ Second सब वाले चलता है, so that's not the parameter to judge, to be very frank. Okay. एक्चुअली उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ. हाँ. Clear? So I guess that's. If there's any word you want me to explain or no, you may let me know. So what is ascensor? What? Ascensor. Ascensor is lift. Okay. Ascensor is lift, though it is on third floor with a lift. And I escalera guess this means is a stairs. Yes, Sir, please go ahead. Arguedas is the name of place. कहाँ? कौन सा? Está en Arguedas. हाँ, जगह Arguez. कहाँ पे है? हाँ, जगह है. Near the city university. Okay. And sir, Some. what about lava PAs? Piso de lava PAs Where is it? in the third one, fourth line. Metro de lava PS. ये पूछ रहे हैं? Mi piso de lava PAs para alquilar y busco una chica joven.
Fourth line. Okay, wait. Lava PS, I guess, is the name of a place also, but it is also known as it's a place. PS means flat. Nahin, So, piso means flat. PS oh, means sorry. feet. Okay. Okay. Where are you reading? Can you tell me? The third one. Okay, because it says now that the flat is near the station of metro of Lava PS. Next, Anuncio uno में, if there's something you want to ask. Shall I ask something? Okay, Yes, sir. what is gastos? Sir, I was about to ask that. हाँ, ये ऐसे ही होता है. Sir, expense. Expenses. Expenses. So the verb is Expenses. the verb is gastar. Gastar is to spend, और gastos हो गया expenses. खर्चे. Okay. Next, let me ask you something. ठीक है, I guess बाकी तो animada. Animada. What is animada? Animation. Like animated मतलब क्या है? चलो इसका animated का बताओ आज. crowded or activities, lot of activities. So you want to say this place is Sir, animated? buzzing. Buzzing. Buzzing around this. मतलब lively, थोड़ा सा dead नहीं, जैसे lively full place of है. full of people. Life or Suppose, excitement. I mean, if I talk about Delhi, I don't know about other places. So you can say So that. like it's What? like चलता फिरता है. हाँ, means it's a lively place, not a dead place कि वहाँ लोग ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है. It's a lively place. Although in foreign countries ऐसी जगह बहुत कम होती है जो lively हो, बाकी mostly तो बहुत कम लोग होते हैं in all the places you go, or anywhere you go, you'll find very less number of people. Okay, that's the general thing. Okay, let me ask you a few more things. What is lose? Luz. Light. Some Light. days. Bijli means light ka kharcha. Okay, like the electricity. Although electricity is electricity, but light means general. Next, last one, if I would ask you, what is quarto de baño? Bathroom. Bathroom. Okay, so if you understand the word, it says baño means bathroom, but quarto is a chota room. Quarto का actual meaning होता है 1/4. So if you say generally a washroom is 1/4 of the room, ऐसा कुछ रहता है. तो quarto उसको छोटा सा quarter type बोलते हैं ना. तो quarto de baño. Clear? Let's move ahead. सर So again, this बुस्को क्या होता है? सर बुस्को okay, क्या होता है? busco is comes from the verb buscar. Buscar means to search. So busco means I search. मैं ढूंढ रहा हूँ. I'm looking for one. To look for, to search. What's an Sir, asio? I have a Okay, doubt. okay, sir. One by one. Please go ahead. An Sir, it's asio. not from the text. Bano. First, Thirumalai, you go ahead, then others. Person. Capto de Bano and asio. What's an asio, sir? Where is it? Next to Capto de Bano, the Annuncio too, the second one. Which line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seventh or eighth line. And Capto de Bano y un asio. It's not aseo. It's aseo. Asio. Aseo means washroom, toilet. Oh, okay. Okay, wait. Let me check. Sir, Colombian में इसको Bathroom. clean. Bathroom and washroom. नहीं. Cleanliness तो वो हो गया ना. Sir, cleaning. But it doesn't mean हाँ, anything ना. No. कोलंबियन में बोलते हैं सर. कंफ्यूज हो गया था एक बार. तो सर मैं पूछा था व्हाट आर यू डूइंग असे. मैं सोचा बार-बार टॉयलेट क्यों जा रही है. But Spain में we take it that way. सर मेरा डाउट था कि टू लीव को क्या बोलते हैं. To leave from one place to leave from one place and go to another place तो बोलते हैं salir. Salir is to go out. No, sir. For example, like. वैसे I'm leaving सर smoking मैंने ऐसा उसको बोलते हैं. स्पेनिश में कर दिया. उसको स्पेनिश लैंग्वेज में कर दिया पूरा. तो टू लीव द क्लैन अबैंडनदार आ रहा है.
नहीं, ओके वेट आई टेल यू, लीव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट डिपेंड करता है आप कैसे लीव की बात करें। सपोज करो एक लीव होता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ ऐसे बाहर, आई एम गोइंग लीविंग माई हाउस, तो द फर्स्ट वर्ड इज साली विच मीन्स टू गो आउट ऑल्सो। सेकेंड लीव इज देखार, देखार मीन्स किसी चीज को छोड़ देना। सपोज करो आप बोल रहे हो कि मैं आपसे जिम जाना बंद कर रहा हूँ ड्यू टू ओमिक्रॉन सपोज, तो यूल से देखो दे इर अल जिम्नासियो, आई एम गिविंग अप, आई एम लीविंग टू गो टू जिम, मैं जिम जाना छोड़ रहा हूँ, वो होता है टू लीव, छोड़ना किसी चीज को। अबांडोनार मीन्स किसी चीज को अबैंडन कर देना, ऐसे बहिष्कार कर देना if you are telling in हिंदी। तो different meanings, different message being conveyed. Okay, sir. It all depends what you want to say. और भी मीनिंग्स हैं वैसे तो लीव के। चलिए let's move ahead, let's see. You can find the vocabulary of the previous actividad in the glossary. So what is amueblado? Furnished. Antiguo is old. Okay, antique से आया word. Céntrico, centered. En un buen estado, in a good condition. Escalera, stairs. And the staircase. Pared is the wall. Sin amueblar means unfurnished. Medio amueblado is half furnished. Nuevo is new, moderno is modern, and las afueras in the outskirt, and mal estado in bad condition. Okay, so then you can go through all these lines and you will understand the difference between ser, tener, and estar. So ser हम कब use करते हैं when we have to tell any adjectives, when we are telling the description, when we are describing the room or the house or whatever. Tener when we say कि इस रूम में इस घर में ये चीजें हैं, means el piso tiene cocina, salón y un cuarto de baño, means the flat has a kitchen, living room and a bathroom. And estar when we talk about the location, position or some temporary characteristic. Example, el piso está cerca de la estación de metro. The flat is near the metro stations. So you can use these words or these verbs and these sentence structures to describe your own home. So one homework that you can do as homework is first is that you describe your house, okay, or your room for that matter, whatever you would want to do it. So let's do this thing. It says look at the following floor map or plano of a house and write down the name of the furniture. Furniture is muebles and and appliances. No, appliances electro domesticos. Electro means electricity. Domestic means ऐसे घर में रखने वाले appliances. So can someone just read all of them together and tell the meaning also, because picture में mark किया हुआ है. Sir, shall I do that? Yes, please. La ventana, window. El espejo, mirror. Espejo El mirror. lavabo, Wash basin. basin. Wash basin. Okay. The verb is lavar. ठीक है, lavar होता है to wash, तो lavabo is क्या कहते हैं, wash basin. Yes, sir. El lavabo, wash basin. La bañera, the bathtub. El armario, the Almira. cupboard. Almira से बोल रहा है. La lampara, lamp. La cama, bed. El ordenador, the computer. La estanteria, like shelf. Shelf. Bookshelf. El escritorio, the desk. The writing Study desk. table. बैठ के पढ़ाई करते हैं, study table. Yes. El sofa, sir, sofa. El televisor. Televisor. La Alfombra. Carpet. alfombra, carpet. La silla, chair. La mesa, table. La nevera, refrigerator. El fregadero, kitchen. Sink. Water is the pot. Okay. Okay, then you can classify कि कौन सी चीज kitchen की है, कौन सी drawing room की है, which is for the washroom, which is for the room, and other things as well. Clear? You can do it at your home. What is this? This is La Casa y sus alrededores, the house and the nearby things and the places.
ठीक है, I guess this would be it. But let's go through these things so that you understand how to write about uh, your nearby areas. There are 4 texts. Let's read them super fast. May I, sir? Yes, Devangna, go ahead. Okay. Vivo en las afueras porque es más tranquilo y hay muchas zonas verdes y parques para los niños. Vivo en Jesus porque सर इसको जीसस नहीं पढ़ेंगे ना Jesus. हाँ, Jesús, Jesus. Jesús, Jesús porque está cerca del centro, es limpio y hay muchas tiendas. Vivo en ahora porque es tranquilo y está bien comunicado con el centro Comunicado. comunicado con el centro de la ciudad en autobús y en metro. Vivo en Ruzafa porque tiene muchos bares y zonas de ocio. Es un barrio con mucha vida. Again, con mucha vida means what lot of life. मतलब वो काफी lively जगह है. Anything else that you're not able to understand, you may ask. afuera. Okay, afueras, I told you, means outskirts. I live in the outskirts. Fuera होता है outside and afueras means बाहर की side रहता हूँ. जैसे दिल्ली हो गया और park is a park. Okay. Park Answer या फिर pork क्या पूछ रहे हो? Parques. हाँ, Yeah, park. porques. Pork means Porques is because. हाँ. Sir, what is ocio? and Cocina is kitchen. Zona. Cocina is kitchen. Sir, zonas de ocio. Okay, Ocio. okay, Ocean. zona. Okay. नहीं, ocean नहीं. Zona means zone. Example ऊपर भी लिखा है. If you see zonas verdes means green zone means green belt kind of a thing जैसे हम यहाँ बोलते हैं. Zonas de ocio. तो ocio means leisure. Means ऐसा थोड़ा leisure life जीने के लिए बहुत सारे zones हैं वहाँ पे. Means जैसे bars हो गए. Means there are good things to enjoy your life. Clear? Ocio means to have leisure. Cafes, bars, pubs and discos and all this stuff. Okay? सर बारिश क्या होता है? बार का प्लूरल बारिश. Clear? So you may write about again your home and now your locality also, that where do you live and why do you live there. You can say that I live near the city center, it's very communicated, there is metro, there are green zones, there is a stadium, whatever you want to write. You can write a lot of things. There's a mall near my house, there are many parks, museum, whatever you want to write. Claro? So now let's move to the block 3. La hora. Okay, this I'll have to teach. The time. आता है किसी को नहीं आता है? No sir. सर मुझे थोड़ा बहुत आता है. Okay, चलो पहले तो एक टाइम पढ़ा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है. Then we'll read this. This is a very interesting read. I've read this earlier. So we'll try and understand कि अर्जेंटीना में और स्पेन में ऐसे टाइमिंग क्या of the things. Then abrir verb, cierro verb, ठीक है. तो टाइम ही है बेसिकली, इसमें तो टाइम पढ़ा देते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज एल क्लीमा. ओके, यहाँ पे आ गए मंथ्स जो हम वहां ढूंढ रहे थे. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड विद द टाइमिंग. द टाइम. लेट मी टाइप इट आउट. Okay, can you see? Yes, sir. Okay, so what is Yes, la sir. hora? Yes, sir. Any idea? Time, the सर hour. आर. Time. The hour. समझेंगे. हाँ, तो अभी ना थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, थोड़े बहुत वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकती है. सो ला ओरा का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो लिटरल मीनिंग है, वो होता है द आर. घंटा. ऐसे बोलते हैं ना कि 1 घंटा हो गया तो ऊना ओरा. बट ला ओरा का जो जनरल मीनिंग है वो टाइम भी होता है कि के ओरा है, व्हाट इज द टाइम. बट टाइम को हम लोग एल tiempo भी बोलते हैं. आई रिपीट, हम लोग टाइम को एल tiempo बोलते हैं. एग्जाम्पल, के tiempo malo tengo en mi vida, what bad time I am having. Okay, or tengas un buen tiempo, you have good time there. बट एल tiempo हम लोग वेदर को भी बोलते हैं.
मौसम को भी हम एल टिएम्पो ही बोलते हैं। क्लियर? सो बहुत सारे वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वी जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट मीन्स वो हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कोई आपसे पूछ रहा है के और एस, उसका मतलब वो आपसे आर नहीं पूछ रहा, वो आपसे टाइम पूछ रहा है। सपोज इफ आई से एल tiempo es agradable, तो दिस वुड मीन agradable मीन्स प्लेजेंट, तो मैं टाइम की बात नहीं करूंगा प्लेजेंट है, मैं कहूंगा वेदर प्लेजेंट है। गॉट इट? सर यू कैन से दैट ला ओरा में हम वॉच को देखकर टाइम बता सकते हैं। मतलब क्या इस बात का? सर मतलब हम एक्चुअल टाइम की बात कर रहे हैं कि वो मतलब नंबर्स पूछ रहा है ना एक टाइप से ला ओरा में। हाँ, तो लाउरा एंड जो इज आर टीएमपो है वो Hmm. मतलब तो चल रहा है, क्या चल रहा है, इस टाइप का कुछ होगा। Okay, if you want to say कि okay, so if you want to define that way, that you can say is if you are telling the numbers कि 1 घंटा 10 मिनट ऐसा 5:30 ऐसा बोलना है, तो हम तब ओरा में ले लेते हैं, और जब हम ऐसे जनरल टाइम की बात करें that may you have a good time there, then we take as tiempo. Okay, but ora also means hour, an hour like. Clear? तो हम ये सब confusion को दूर करते हुए सिर्फ ला ओरा पे आ जाते हैं। Now how do we ask what is the time? A ora is. How do we ask? So how do we ask? A or is. We say what is the time. So I'll give all the examples one by one, then you see how to use it. So we'll say son las dos. क्या बोलेंगे? Son las dos. Son las dos मतलब होता है it is 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं en punto. What is en punto? 2 o'clock. डॉट या एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं। punto मतलब होता है पॉइंट, पॉइंट 2 मीन्स एग्जैक्ट डॉट 2 बज रहे हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना पूरे 2 बज Two, गए। 2 o'clock. Can we say this? It is 2 o'clock. हाँ, से son las dos। हम लोग एन पुन तो नहीं बोलेंगे तो भी समझ में आ ही जाएगा। सर 24 आवर टाइम यूज करना है या फिर एएम पीएम यूज करना है? हाँ, एम पी एम भी सिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ बोलेंगे son las dos y 10। ठीक, son las 2:10, 2:10। 2:10। क्लियर? Got it, sir. नाउ व्हाट Yes, इज sir. 2:25? हमने 25 पढ़ लिया है। Son, son las 2:25. 25 नॉर्मल चल रहा है, कुछ अभी तक हमने रॉकेट साइंस नहीं करी है। 2:25 ऐसे 2:25 son las 2:25। क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। सपोज ये आपकी घड़ी है। क्लियर? इस घड़ी में क्या होता है, जब तक मिनट हैंड बीच में है, मतलब जब तक मिनट हैंड राइट हैंड साइड पे है, तो इफ द मिनट हैंड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तब हम यूज करेंगे मेनोस, राइट में है तो हम लोग यूज करेंगे ई। आई रिपीट, अगर मिनट हैंड राइट साइड में है, मतलब 12 बजे से लेके 6 बजे तक है मिनट हैंड, तो हम ई यूज करेंगे। और अगर 6 to 12 है तब हम +1 hour एंड मेनोस यूज करेंगे। ओके, यस और नो? Yes, sir. अभी यस सर। आई शो यू ऑल द एग्जांपल्स। सर रिपीट एक बार। हाँ, पहले एग्जांपल देखें फिर रिपीट करते हैं। ठीक है सर। You got to wait, I'm getting a call at home. Just a minute.
Okay, let's go ahead. Ok, lo siento, chicos. Vamos a continuar. So we were here and suppose the time is 2:40. ठीक है, हम इसको लिखेंगे 3 o'clock minus 20 minutes. आंसर हो जाएगा son las 3 menos 20. इसको हिंदी में बोलते हैं 3 बजने में 20 मिनट है. क्या बोलेंगे? Chicos, yes or no? Got it, sir. Where are you writing, sir? Yes, sir. Okay. Yes, sir. From 35 minutes, you have to lesser than the नहीं 31 होते ही. 31. Okay. I'll give you one more example here. 31 का भी दे देते हैं. So the time is 2:31. We'll say 3 minus 29. Son 3 menos 29. ओके, ये हो गया समझ में. अब यहाँ पे हम एक नोट लिख के एक और लाइन लिख लेते हैं. तो टाइम इज 2:15. 15 देख लेते हैं. Sir, are you typing? हाँ, आई एम टाइपिंग एंड आई एम शेयरिंग ऑल्सो. शेयर नहीं है क्या? यस, आई एम टाइपिंग. It is shared. टाइप शो नहीं हो रहा. आई डोंट नो, मेरे यहाँ पे तो आ रहा है. नहीं, it is shared. क्वार्टो. क्वार्टो मतलब क्या होता है? क्वार्टर. तो इसको हम यहाँ पे एक चीज और समझते हैं. क्वात्रो होता है 4 एंड क्वार्टो होता है 1/4. क्लियर? तो ये क्या हुआ? 2:15 मतलब 2 and a quarter. सो दिस इज son las 2 y cuarto. पहले आर आएगा, बाद में टी आएगा. सर, आपने सोन Yes. के बाद इसमें लास्ट नहीं लगाया, तो इसमें लास्ट नहीं अच्छा, आएगा. आएगा, बिल्कुल आएगा. क्लियर? यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज और है. 2:30 को क्या कहते हैं? सर एक बार 240 वाला बता देना स्टार्ट. पहले ये समझ लेते हैं. मीडिया. मीडिया मीन्स हाफ. मीडियम. ठीक है. 2:40 वाले में आते हैं. son las 3 menos 20. इट मीन्स 3 बजने में 20 मिनट है. son las 3 menos 3 minus 20 minutes. 3 बजा दिया और फिर -20 मिनट्स कर दिए. क्लियर? ओके सर. तो तभी मैंने ऊपर लिखा है +1 आर एंड मेनोस एंड माइनस यूज करेंगे. Okay. ये समझ में आ गया? तो लेट्स डू सम टाइमिंग्स. थोड़ा टाइम करते हैं अभी. Suppose the time is 6:40. 50 कर देते हैं. चलो इजी टाइम देते हैं. 10, 15, 9, 30, 7, 55. Okay, let's do it right now. Son las 7 menos हाँ, 10. wait. We just won't direct jump there. Take 2 minutes. Everyone try all of them and then we discuss. सबको try करने देते हैं. Okay, sir.
Hola. That was my daughter. Okay. I thought some students just joined. So let's discuss 650. What would be 650? Son las Hmm. 7 menos. Please mute. Okay, to be son las 7 menos 10. 7 बजने में 10 मिनट है. Son las 7 menos 10. Yes, Supriya, it's right. Next, 10:15. Son las Son las 10:15. Okay, Supriya will put an e after 10. Okay. And rather you also will not put u, it will be y, e. Next, 9:30. Son las 9 y media. Media, ठीक है? 9 media, media. Next is 7:55. Son las 8 menos 5. I guess जिसने भी लिखा है everyone is right. Let's move ahead super fast. Now let's see. यहाँ पे अब एक नोट लिखेंगे दोबारा. नोट क्या बोलता है? नोट बोलता है 12:31 to 1:30. हम लोग क्या यूज करेंगे? इस्लाऊना. क्लियर? इसका लॉजिक मुझे कौन और क्यों बताएगा? Sir, it is one, sir. La una. La means the one. ओके समझेंगे. 12:31 to 1:30 द टाइम इज 1. जो आर है वो एक है, वो सिंगुलर आर है, तो हम सब कुछ सिंगुलर कर दिया. सॉन को एस कर दिया, लास्ट को ला कर दिया, और ऊना तो रहा ही. अब वो टाइम है, आर ओरा है, ऊना है, फेमिनिन है, इसलिए ला आया वहां पे. क्लियर? ओके. सो सपोज इफ समवन आस्क यू 1:15 पे टाइम और क्या हो रहा है, तो विल से एस्ला ऊना ई क्वार्टो. क्वार्टो तो क्वार्टो ही रहेगा बिकॉज वो मिनुतो है, वो मिनट है. ओके चलिए लेट्स मूव अहेड. Can you explain the reason again? हाँ, Why we जो say टाइम Islam? है ना, जो आर है ना, आर है वो एक आर है, एक बज रहा है, तो सिंगुलर है ना. एग्जाम्पल, जब टाइम 2 बजते हैं तो कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स हो गए. 3 हो गए 3 आवर्स, 4 हो गए 4 आवर्स. तो ये सब प्लूरल है, तभी हम वहां पे सॉन, लास, दोस. सॉन भी प्लूरल, लास भी प्लूरल. बट यहाँ पे जो आर है वो एक आर है, सिंगुलर है, तो हम वहां लिखेंगे एस ला ऊना. क्लियर सुप्रिया? No, sir, not still. Because you have written that to 12:31 to 1:30. 12:31 को हम क्या बोलेंगे? 1 minus 29 minutes. Yes. तो फिर से एक आ गया ना. लेट मी टाइप. नहीं, मैं दिखाता हूँ, कोई बात. द टाइम इज सपोज 12:40. 12:40 में क्या लिख रहा है? हम लिखते हैं यहाँ पे 1 minus 20 minutes. तो 1 को क्या लिखेंगे? एस ला ऊना. भाई एक ही घंटा हुआ ना. menos 20. 1 minus 20 minutes. एक बज का पहले 1 बजा दिए, फिर 20 मिनट माइनस किए, तो जो 1 बज रहा है, तो आर तो एक ही है ना, सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है. जब नाउन प्लूरल है तो उसका रिलेटेड वर्ब भी सिंगुलर. इफ द नाउन इज सिंगुलर तो उस रिलेटेड जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, और जो उसका आर्टिकल है वो भी सिंगुलर होगा. मेनोस वाला वर्ड अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन करना है. हाँ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है. Okay. वो जो चलता रहा है वो ऐसे ही चलता है. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. लेट्स पे अटेंशन. नाउ एएम बस लास्ट थिंग है, इसके बाद ये टॉपिक डन. एएम, पीएम. व्हाट इज एएम? एएम इज de la. Anti-meridian. De la mañana. अरे एंटीमीडियंस इन इंग्लिश. de la mañana. ओके. पीएम वुड बी de la tarde, आफ्टरनून, और de la noche मींस रात के बज रहे. Then we've got mediodía. क्या है? Medio means half. Afternoon. तो ये हो गया नून. आफ्टरनून नहीं, नून हो गया. Medio means half, dia is less. Half day means noon. फिर है यहाँ पे हमारे पास एक सिमिलर वर्ब, वो है media noche.
तो ये हो गया मिडनाइट, रात के 12 बजे। ओके, बस इसमें एक वर्ड हो रहा है माद्रुगादा। माद्रुगादा क्या होता है? इफ यू पे अटेंशन, हम जब बोलते हैं कि सुबह के 2 बज रहे हैं, सब कुछ ब्लैक होता है तो हमें लगता है वो रात है। तो समवेयर अराउंड आफ्टर 12 टू अराउंड 4:35 तक हम लोग माद्रुगादा बोलते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ AM एंड PM। आई रिपीट, टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ AM एंड PM हम लोग यूज करते हैं देला माद्रुगादा। माद्रुगादा मतलब होता है सुबह सुबह का टाइम भाई, आफ्टर मतलब आफ्टर 12 टू 4 o'clock इन द मॉर्निंग हम लोग माद्रुगादा यूज कर सकते हैं। ओके chicos, Yes, sir. चलो लेट्स What is por व्हाट इज la noche? पोरला नोचे होता है। ओके समझेंगे, जब भी हम टाइम की बात करते हैं ना तो हम लोग दे लगाते हैं। वाई दे डू वी पुट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। इट इज सपोज अभी का टाइम हो रहा है, इट्स सपोज 5:45, तो आई विल से son las 5 menos cuarto de la tarde। भाई आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम हो रहा है, बट मैं बोलूंगा son las 9 de la noche, रात के 9 बज रहे हैं। बट मुझे अगर कोई जनरल सेंटेंस बात करनी है दैट आई हैव क्लास इन द मॉर्निंग, तो आई से por la noche tengo la clase de español, फिर हम वहां por la noche बोलते हैं। Okay. डाउट? madrugada एज इन डॉन, हाँ यू कैन यूज दैट फॉर श्योर, बट हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते ना सुबह इट्स 2 o'clock ऑफ द डॉन, वी नेवर से दिस, so that's why I was not telling you to equate। सर सर डॉन वैसे फर्स्ट लाइट होती है, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, तो हाँ सर तो that means इसमें we मतलब don't say मिडनाइट, that। तो डॉन डॉन कैसे यूज, डॉन तो हाँ नहीं यूज होगा मुझे लगता हाँ है। नहीं यूज करेंगे, दैट्स समथिंग ना, तो इट्स अ डिफरेंट टाइम फ्रॉम रात को 12 बजे। ओके लेट्स अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, बिकॉज सपोज हम लोग AM PM में कंफ्यूज हो जाते हैं ना भाई, 4 लिखा है, 4 PM लिखा है या AM लिखा है, जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन दे यूज माद्रुगादा। सिंपल, माद्रुगादा मतलब सुबह के 4 बजे। क्लियर? बिकॉज टेक्निकली तो वो रात है ना, इट्स Yes. डार्क। ओके लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू दिस एट होम। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 क्या बोलती है यहाँ पे? देयर आर फ्यू वॉचेस गिवन एंड देयर आर फ्यू टाइम्स यू कैन जस्ट मैच, इसको मैचिंग कर सकते हैं। देन ये लिखा है राइट हैंड साइड पे आ गया son las 3 en punto और son las 4 menos 25, तो ये राइट हैंड साइड पे ई लिखा है। आई होप यू कैन सी। Yes, sir. हाँ तो राइट हैंड साइड वाले पे अगर मिनट हैंड होगा वील राइट ई, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो मेनोस लिखेंगे +1 hour। Let's see here it says, as you can see in the previous activity in Spanish, we can divide the clock in 2 phases. From 12 to 6, we use the hour and we add the minutes using E या Y, which is 3:10 las 3 y 10, 7:20 las 7 y 20. From 6 to 12, we use the hour we are going to reach and we rest the minutes using menos। तो एग्जांपल 3:40 हो गया las 4 menos 20 and 7:50 हो गया las 8 menos 5। आई होप इट्स टोटली क्लियर, कुछ इशू नहीं है। Yep. Yes, sir. परफेक्ट। ये सेम चीज यहाँ पे आ गया। ओके बस एस ला उना समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया, इसमें डायरेक्ट लिखा है, आई हैव जस्ट यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। सो दिस वुड बी ओके। एक बार ये देख लेते हैं, son las y menos we can also express the time numerically using 24 hour clock। someone asked कि कैसे करेंगे clock used in official timetable, for example son las 4:40 4:40, तो हम लोग 40 तक भी बोल सकते हैं चाहे तो। ओके we always use son las but we say es la una and for 1 o'clock and es la una y 20 for 13 means
मीन्स 120 के लिए. दिस यू कैन प्रैक्टिस एट होम. अच्छा आ गया. 0 to 5 madrugada mañana, 6 to 12 mañana, 12 to 7 tarde, and 9 to 7 to night noche. Clear? Chicos. तो मैंने 5 बोला, 6 मीन्स टिल द सनराइज. जनरल जो एजेंडा ऐसा रहता है, जब तक डार्क रहता है, अर्ली मॉर्निंग. दिस अगेन वी हैव डन. यू मे जस्ट गो थ्रू इट एट योर होम. Again, ये आ गया pour और उसका आंसर. You can just read it once. It says, notice the use of the preposition they in the above examples. We have added the preposition they to express a definite time. For example, son las 10 de la noche, it's 10 p.m. Or son las 6 de la mañana, it's 6 a.m. Whereas to express a period of time, we use the preposition por. For example, por la mañana, por la tarde, or por la noche. In the morning, in the night, or in the evening. That is the meaning. Next. Okay. Okay. चले आगे. Again, K or S. Again, you can do at home. This is the listening activity. They'll tell the time. You just mark it. What is this? This is Hora de Trabacas de los Países. Is this some activity? ओके आई गेस इसमें क्या है, ऊपर जैसे टाइम गिवन है तो आपको एच लिखना है, ओ तो ऐसे पूरा एक वर्ड बन जाएगा ओला करके. यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ये रहा. तो यहाँ पे वर्ड बनेगा. इफ यू प्रैक्टिस दिस ना, कि एग्जांपल त्रेस ई दिएस, तो त्रेस ई दिएस कहाँ पे है? त्रेस ई दिएस इज वेज त्रेस ई दिएस, ये रहा सी. तो ऐसे आप लिखोगे सी, और फिर आगे जो लिखा है सोनलास त्रेस इन पुंतो में कुछ और आएगा, तो ऐसे पूरा एक वर्ड बनेगा. यू मे डू दिस एट होम. गुड एक्टिविटी. Let's read this. This is very interesting. So you have to read this and then we can tick mark true and false. Let's do it right now. Abhi kare? This would be interesting to do, I guess. Yes, sir. Chaliye, let's do it right now. Someone you would want to read? Yes, sir. Yes, anyone who has not read, you may read. Okay. Anyone wants? Go ahead. Well, I can. So we read, let Devangna read, and then later on second one you can read. Okay. Horario comercial de Barcelona, España. El horario comercial de Barcelona es bastante extenso, por lo que las visitas a los museos y lugares. Wait, it's not museos, it's museos. Museos y lugares de interés pueden combinarse con facilidad con las sesiones de compras. La mayor parte de las tiendas de Barcelona abren de lunes a sábado de 9, son las 9 un punto. Nueva होता है new. 9, हाँ, son las 9 un punto. En punto. En punto. 9 ठीक. इसको आ ही पढ़ेंगे. हाँ, a una y media y de 5 a 8 horas. Aunque algunos pequeños comercios cierren los sábados por la tarde, los centros comerciales están abiertos de lunes a sábado son las 10 अच्छा wait. son las 10 punto 2 है ये, I think it is indicating 2. Wait. So I'll read. Los centros comerciales están abiertos de lunes a sábado de 10 a 10. From आपको वहां पे सॉन लास्ट द्वारा नहीं बोलना, बिकॉज समझेंगे. सॉन लाभ हम कब बोलते हैं? सॉन हम तब बोलते हैं जब हम टाइम बताते हैं. एग्जांपल इट इज के लिए सॉन यूज होता है.
But यहाँ पे verb already we have used this. Están abiertos are open, so we will not use son las again. So we will Sir, read can't you this. say 10 a 20? 20 क्यों बोलेंगे? 22 लिखा ना, 20 22 बोलते हैं या फिर 10 to 10 हो गया ना भाई. अब इतना तो हमें समझ में आएगा कि हम सुबह 10 से शाम के 10 की बात कर रहे हैं. You Sir, can say it 24 from 10. hours. नहीं These नहीं, फिर two. उसमें 24 आवर्स लिखेंगे ना, 10 to 10. अब आप बोलते हो 8 से 5, तो वो सपोज 9 to 5 आप बोलते हो मैं जॉब करता हूँ, तो वो क्या रात को 9 से सुबह 5 बजे तक होता है? नहीं ना. So Okay, that's sir. like Algunos centros comerciales como Mare Magnum abren todos los días del año, incluyendo domingos y festivos. Los museos en Barcelona abren generalmente de martes a domingo de 8 horas. Los lunes a mayoría de los museos permanecen cerrados, aunque existen algunas excepciones como el Museo del del, chocolate. del Chocolate o el Museo de Cera, que se pueden visitar todos los días de la semana. Los bancos abren de lunes a viernes de 8:30 o dos. तो वो dos, los sábados de 8:30 o 1 uno नहीं, una. a 1. En verano los bancos no abren los sábados. Hay oficinas de cambio en el centro. कहाँ है oficinas? Hay oficinas de cambio en el centro अरे de la ciudad. oficinas. Oh, sorry. Oficinas de cambio en el centro de la ciudad. Los principales sitios turísticos, la estación de Santos y la estación de autobuses Barcelona Norte. Estas dos últimas abren hasta las 10 रात को 10. 10 बजे तक खुलते हैं. Okay, these two stations. So now let's read about the Argentina part. जैसे हमने Sir, I think have a doubt, sir. हाँ, please go ahead. For example, जैसे देवांगना ने बोला कि ocho है miedo. Ocho y media. सर मेदिया आएगा या फिर मेदियो भी चेंज हो सकता है? नहीं, मेदिया आएगा. आप समझो ना, मेदिया क्यों आएगा? हम आर की बात करें कि आधा आर है, तो जो आर वर्ड है वो फेमिनिन है. ओके सर. ओके, अगर हम बोलते हैं आधा मिनट, तो हम बोलेंगे मेदियो, मिनुतो मेदियो, ऐसा. बिकॉज वो मिनुतो है, वो मिनट है. ओके सर. समझे? अगर मुझे बोलना है 1 मिनट, तो मैं क्या बोलूंगा? una minuto या फिर un minuto? un minuto, बिकॉज minuto मैस्कुलिन है. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट. Sir, shall I read, sir? Yeah, anyone in the class who wishes to can go ahead. Horario comercial de Buenos Aires, Comerciales, अच्छा ठीक है, comercial, ठीक है, horario comercial. Argentina. El horario comercial en Buenos Aires es similar a otros países de Latinoamérica. Los comercios normalmente cerran un par de horas durante la hora de comer. El horario para oficinas es desde las 9 hasta el mediodía y de 2 a 7, aunque muchas de las grandes oficinas abren durante todo el día. Los bancos abren a las 10 y cierran a las 3. Algunos bancos extienden el horario hasta las 4. Se pueden
re- real- realizar Mhm. extracciones de dinero y otras transacciones en los cajeros Cajeros. automáticos que funcionan las 24 horas. Las sucursal de turismo en Banco Ciudad ofrece para el turista. Se pueden cambiar dólares, euros y cheques de viaje, traveler checks, Traveler check. en, en un horario más amplio que el de los bancos. Los horarios de atención al público son martes a viernes de 10 a 5, sábados y domingos de 11 a 6, lunes de 10 a 6. Son bancos exclusivos para turistas. Requerimiento tener pasaporte. Los museos y atracciones turísticas serán generalmente los martes y muchos de ellos cerran un mes durante el verano. Las oficinas de correos abren a las 9 de lunes a sábado, cierran a las 8 de lunes a viernes y a las A 1 las una, los sábados. sábados. La mayoría, Wait. Anyone else wishes to read? Let us give chance to someone else who wishes to. No one? Okay, Radha, go ahead. The last paragraph. La mayoría de las tiendas en el centro de Buenos Aires abren los días laborables de 10 a... सर इसको ऊंचे पढ़ेंगे ना 8. 8 y los sábados hasta las cierren los domingos. Normalmente las tiendas pequeñas cierren durante las horas al mediodía. Los centros Centros. comerciales abren hasta las 8 10. 10, incluso los fines de semana y algunos festivos. Okay, perfect. Who was the guy who read this before? I guess it was Saurabh. sir, which one, sir? You read it, na? अभी इससे पहले तुमने पढ़ा था ना? Yes, sir. So I'll advise you one thing. Although it's advice for everyone, now once the class gets over ना, तो 1 घंटे के बीच में आप इसको twice or thrice थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल एल और आर बहुत तेज से चिल्ला के पढ़ेंगे. क्लियर? Okay, sir. ओके. और 2 बार तो बहुत तेज से चिल्ला के पढ़ेंगे. पीपल विल थिंक कि व्हाट इज हैपनिंग, बट उसमें क्या होगा, उसमें एग्जाम्पल आई गिव यू व्हाट हैपेंस विद योर व्हेन यू स्पीक अ वर्ड वेरी लाउडली ना, तो वो व्हेन यू स्पीक इट इन अ नॉर्मल टोन तब वो नॉर्मल हो जाता है. तो ऐसे थोड़ा चिल्ला के आप तेज आवाज में पढ़ेंगे, इट विल बेनिफिट यू. फर्स्ट टाइम ऐसे करेंगे, सेकंड नॉर्मल पढ़ेंगे, थर्ड टाइम में सुपर फास्ट पढ़ेंगे. क्लियर? यू विल डू इट 3 Sir, times. actually, that's the way I practice mostly. हाँ ठीक है. मैं गाना बजाता हूँ पीछे एंड वही गाना गाता हूँ चाहे सामने वाला बेहोश हो जाए. हाँ. तो रीडिंग भी ऐसी करेंगे. एंड दिस इज फॉर एवरीवन. Supriya, Mayank, Devangna, anyone who wishes to read at home. So what you do is, first one it has to be loud. Example, El horario comercial. इससे भी loud. I can't be too loud on the class. ऐसे चाहे आपको सामने रख के एक वर्ड करके चलाना पड़े. You do that way first. Second has to be normal. Third has to be super fast. Clear? Thank you for your advice, sir. Yes, sir.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, Everyone sir. So now let's do the question answers, because you will also get true false types question answer या फिर written and comprehensions in your exam. So let's do it. Si estoy en Barcelona. If I'm in Barcelona, puedo ir a cualquier museo los lunes. I can go to any museum on Mondays. Is it true? Let's see. ये लिखा los museos and okay, wait, first of all, any word that you don't understand. Cualquier. Any. So, Any. okay, sir. Anyone else? Sir, comercios. Comercios? Commercial. कमर्शियल सेंटर ऐसा. कॉमर्शियोज जो सबसे ऊपर लिखा है ये कॉमर्शियल है, मींस कमर्शियल, एंड कॉमर्शियोज मींस कमर्शियल जो दुकानें होती हैं. नेक्स्ट. Okay, sir. That's it. Such a cool and good class. Abiertos. What? Abiertos. Abiertos. Okay, abiertos has the word come from abrir. अभी इसी के बाद है वो verb. Abrir means to open. ये लिखा abrir है ना. Abrir is to open and abierto is opened. Opened. It's in participle. Next. Sir, I will read the text like, sir, in detail after the class, sir. I mean, हाँ ठीक है, sure. So tomorrow then you can ask the words or you can look through Google itself. Let's do the question answers. Question answers अभी करें या फिर होमवर्क में कर लेंगे? सर अभी कर लेते हैं. अच्छा, फर्स्ट अभी वाला false. फर्स्ट वाला false है. ऐसा क्यों? Because First paragraph it's written los lunes la mayoría de los museos paramenses cerrados. सेरादो मीन्स क्लोज रहते हैं. ओके, बट दो ऑप्शंस हैं जो खुलते हैं, वो है म्यूजियम ऑफ चॉकलेट एंड म्यूजियो दे सेरा. क्लियर? तो यहाँ फॉल्स हो गया. नेक्स्ट. एंड बुएनोस आयरेस पुएडो ir a la oficina de correos el domingo. What is oficina de correos? What is correos? ईमेल आईडी. नहीं, correos यहाँ पे हो गया पोस्टल मेल, तो पोस्ट ऑफिस हो गया oficina de correos. ऑन संडे, भाई बुएनोस आयरेस में संडे को जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस, यस और नो? लेट्स सी. इसमें क्या लिखा है? las oficinas de correo abren a las 9 de lunes a sábado. और संडे को क्या होता है? संडे को नहीं जा सकते, छुट्टी होती है. क्लियर? Also. Falso. Yo sí vivo en Buenos Aires. If I live in Buenos Aires, puedo ir al banco después del trabajo. I can go to the bank after the work at 5 in the evening. Yes or no? No sir. Sir maximum 4 तक खुलता है. Okay, I don't know. What did you say, Chico? It opens till maximum 4. हाँ, 4 तक खुलता है, तो 5 o'clock जाएंगे तो इट विल बी क्लोज. नेक्स्ट. Si estoy de visita en Barcelona, if I am on a visit in Barcelona, necesito cambiar dinero. So cambiar dinero means to change money, to exchange, कि ऐसे पैसे देके means rupees देके डॉलर लेना. Puedo hacerlo un sábado al mediodía. I can do the change on Saturday noon. Is it true? कर सकते हैं क्या हम ऐसे money change? Where is it first of all? Sir martes a viernes. Sir उसी पेज पर टॉप में है. Okay, ये लिखा है. तुर्जुमो एंड बंको ciudad. साबादो को हम लोग कर सकते हैं ना, लिखो ना, लिखा है मार्टेस लिखा है, उसका साबादो एंड डोमिंगो लिखा है 11 to 18. तो 11 to 18 डोमिंगो हम लोग कर सकते हैं साबादो. तो आई गेस हाँ, बट वी कैन डू इट. ओके, सो ट्रू हो गया. नेक्स्ट इज en Buenos Aires todas las tiendas abren de 10 a 8. Buenos Aires में all the shops open from 10 to 8 on the working days. Is it true? I don't know. Sir 9. Yes, sir, it is true. In the last para, it is 9 given. to 8 शायद. Wait. Sir, in the last para, it is given 10 to 2. Okay. ठीक है, चलो 10 to 2 is right. Let's move ahead. ठीक है, चलिए. En Barcelona puedo ir de compras los domingos. Can I go on shopping on Sundays? अगर मैं बार्सिलोना में हूँ.
बताइए, शॉपिंग करने जा सकते हैं क्या संडे को? आई गेस जा सकते हैं मॉल में। नहीं, देखो ना, ये वाला मॉल जो है मारे मैग्नम, इट ओपन्स ऑल द डेज ऑफ ऑल द ईयर, ऐसा मीन्स पूरे, चाहे संडे वनडे हो। तो हाँ, हम लोग शॉपिंग करने यहाँ जा सकते हैं। क्लियर? अगर शॉपिंग करने सिर्फ वहां जाना है। बट इफ यू वांट टू गो टू ऑल द नॉर्मल शॉप्स पे जाना है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो नहीं जा सैटरडे पाएंगे, क्योंकि सैटरडे को बंद होती है। संडे के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ऑल तो लिखा है क्या? नो। तो वी मंडे से सैटरडे चलती है वो हाँ, शॉप्स। तो इफ यू वांट टू गो टू दिस मॉल, देन वी कैन गो ऑन संडे, एल्स कांट। चलिए, लेट्स मूव अहेड. Then we have got the verb abrir. Abrir is to open. So abro, abres, abre, abrimos, abris, abrain. एकदम रेगुलर IR एंडिंग वर्ब है. नॉर्मली कॉन्जुगेट होगी. क्लियर? सेरार इज अ रेडिकल चेंजिंग वर्ब. हमने रेडिकल चेंजिंग वर्ब्स नहीं करी ना. Irregular verbs. दिस इज रेडिकल चेंजिंग वर्ब. इरेगुलर भी लिखा होगा कई बुक्स में. ऑल्दो जो रेडिकल चेंजिंग मतलब ये स्टेम चेंजिंग वर्ब भी लिखा है ना. द वर्ब चेंजेस द स्टेम. इसको स्टेम चेंज वर्ब भी बोलते हैं. इरेगुलर वर्ब्स कुछ और भी होती है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. Okay. देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, जिसमें जी आता है, गो फॉर्म्स एंड ऑल स्टफ. Excuse me, sir. यस. I want to ask one basic point. हाँ, पूछिए. What is the difference between ER, IR, and AR? इनका कॉन्जुगेशन अलग होता है. ए आर का होता है ओ आस आ आमोस आइस आन. ई आर का है ओ एस ए मोस इस एन. एंड आई आर का है ओ एस ए इमोस इस ए. Only the conjugation difference is there. हाँ, बट पूरे स्पेनिश में सिर्फ 3 टाइप की वर्ब्स होती हैं, या तो ए आर एंडिंग वर्ब होगी, या फिर ई आर, या फिर आई आर. इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है इस करती. Okay. ऑल द वर्ब्स इन स्पेनिश आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ईदर ए आर एंडिंग, ईदर ई आर एंडिंग, या फिर आई आर एंडिंग. So now let's. Rather, you're not audible. It's very disturbing. Sir, what's the mean of serer verb? सेरेर नहीं, सेरार इज टू क्लोज. अच्छा, आबरी मतलब टू ओपन, टॉप खोलना, टॉप को बंद करना, सेरार. तो जब हम ऊपर लिखा था आबियर, तो वो आबरी से आया है. ये लिखा आबरी इज टू ओपन एंड सेरार इज टू क्लोज. ओके. Okay, sir. Perfect. Then we go to indicate opening time or days. We use the following prepositions. They or a means from to this, and desde and hasta is since or from to till. Example: the preposition they and desde indicate the starting point, the beginning, and a and hasta indicates the end, the final point. Can someone read the examples and the one which is written here? Go ahead, but make sure there's no disturbance behind you. Sir, el horario. यहाँ से. No, both the expressions. Both the expressions mean the same thing. Okay. Both the expressions means the same, but not that if we want to use desde, hasta, we also need the definite articles el, la, los, las. Let's see some examples from the above text. El horario para oficinas es desde las 9 hasta el mediodía y de 2 a 7. Los bancos abren de lunes a viernes de 8, son las 8:30 a son las 2 y los sábados de son las सॉन नहीं बोलेंगे बेटा, आप समझो. आपको मैं पहले बोला सॉन तब बोलते हैं जब टाइम अकेले होता है. इसमें यहाँ पे वर्ब हमने यूज कर दिया abrir. I'll read it again. Please mute. It says el horario para oficinas. Please mute, Radha. हाँ. It says el horario para oficinas es desde las 9 hasta el mediodía y de 2 a 7. तो अगर हम desde और hasta बोल रहे हैं तो हम las या el लगाएंगे. बट अगर हम दे और आ नहीं बोल रहे तो हम सॉन, तब हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज लॉस बांकोस abren de lunes a viernes, from Monday to Friday, de 8:30 a 2, from 8:30 to 2 o'clock,
y los sábados de 8:30 a 1, from 8:30 to 1 o'clock. Okay. La mayoría de las tiendas en el centro de Buenos Aires abren los días laborales de 10 a 8 y los sábados hasta las 1 y cierran los domingos. Okay. So on it says the majority or the like most of the shops in the center of like Buenos Aires, they open all the days. They open all the days from 10 to 8, and on Saturdays from 1 and like till 1 o'clock, and they close on Sunday. Sunday को बंद रहता है. Clear? सो बेसिक डिफरेंस इज, अगर देश दे आस्था लिखा है तो उसके साथ एल ला लॉस लास लगेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है. अगर दे और आ है तो कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्टली टाइम लिख देंगे. So you may do this at your home. It's your turn to practice now. Horary means timings. Horary means timing. Horary also means timetable. दोनों मीनिंग होते हैं. ठीक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जो नीचे लिखा है इसमें लिखा है la librería papel abre a las 10 de la mañana y cierra a las 8:30 de la noche de lunes a viernes. तो इसमें हमने desde और दे एंड आ भी यूज किया है. de lunes a viernes. ठीक है. Los sábados, तो यू कैन राइट कि सैटरडे को कब खुलता है by looking at the picture. Let's move ahead. ये हमने कर लिया के और एस और आ के और डैश डैश डैश. के और एस मीन्स व्हाट इज द टाइम. आ के और मीन्स एट व्हाट टाइम. अगर हमें इसके बाद लिखना तो वी कैन राइट एनी वर्ब. एग्जांपल, a qué hora estudias, at what time do you study. a qué hora tienes la clase de español, at what time do you have the Spanish class. a qué hora abren los bancos, at what time the banks open. a qué hora duermes, at what time do you sleep. Clear? तो ये सब आंसर्स लिखे हुए नीचे. यू कैन राइट द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस एट होम. ठीक है. अब क्या है, आंसर्स गिवन है, यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस. So this is the okay. So you can read this. This is the like the brief summary of the vocabulary used about for time. I guess we should read this. This seems to be important. Anybody wishes to read? Sir, a second, un segundo, a minute, un minuto, a quarter of an hour, un cuarto de hora, an hour, una hora, a half hour, media hora, in the morning, afternoon, evening, por la mañana, tarde, noche. What time is it? At what time? ¿Qué hora es? ¿A qué hora? At exactly 5 o'clock. A las 5 en punto. A about 5 o'clock. A eso de las 5. In an hour. En una hora. In a while. Dentro de un rato. Early. Temprano. Late. Tarde. Until 5 o'clock. Hasta las 5. Before 5 o'clock, antes de las 5, after 5 o'clock, después de las 5. Okay, so it says there is a Spanish proverb which says trece y martes ni te cases ni te embarques. It means on Tuesday the 13th, neither get married nor board a ship. ना ही शादी करे ना ही ship play. Clear? So these are the answers of the exercise given below. Now let's move to El Clima. Shall we start this, or shall we do some smaller thing that can be done? Okay, these are the reflexive verbs and radical changing also together. Okay. Let's see if we can do the climate part in 10 Sir, minutes. do we have class tomorrow? Wait, let me check. Tomorrow, no, tomorrow there is no class. The class is directly on 3rd now. 3rd को Monday है क्या? Yes, sir. हाँ. Yes, So sir. we directly have the class on Monday now because अभी जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसमें 29th 30th हो गई आज.
Then we have a class on 3rd now. 3rd होगी वो हमारी 6th class होगी. 1 2 3 4 5 6 7th class होगी. 107th class. Yeah. फिर I'll tell you the class. अच्छा, I don't know you have this or not, this sheet. Sir, we have. Excel. तो 3rd है, 4th 5th 6th है, 7th है, फिर 8th 9th को नहीं है, 10th 11th 12th, then है 15 16 17 to 19. Okay, have you got the date of your examination? When is it? Yes, sir. Yes, When sir. is your exam? What? 20 January and 24 January. 20 and 24. 20 and 24. 28 को 001 का है, 01 and 20 02 का on 24th. Is it like this? 24. Okay, let me ask a question. How many are actually appearing for it? Can Sir, you- only 001. Me. So both. No, all those who are appearing for your exam, just raise your hand, virtual hand. Let me see how many. Sir, both are one. Wait, पहले हम जनरल पूछ रहे हैं. Okay, ऐसा करते हैं, सबसे पहले all those who are appearing for one, you raise your hand. Let's do this with it. Wait, मैं ना सारे hands down कर रहा हूँ. Let's do it again. Okay, now all the hands are down. All those who are appearing for exam 1, BSL 001 can raise their hand. So only Saurabh, Shalini and Deepak and Daud are there. 4 students. Okay, now all those who are appearing for 2, please raise your hand. Okay, we got Supriya. Supriya, have you given 1? Okay, vegan. Give the exams. Okay, 4 5 4, like 5 6 students. ठीक है. So have you submitted your assignment till tomorrow? I guess tomorrow is the last date for Yes, sir. submission of your I assignment. have submitted. Yes, sir. All those and were there few students who were not able to upload? Have you got it? Were you able to do it, or what's the seed? Or you still need some help? Chicos, I need help on that practical exam thing. उसमें क्या help चाहिए बताओ? विकास, मिस्टर विकास से उसमें उन्होंने कहा था ना कुछ रिकॉर्डिंग क्वेश्चन भेजेंगे, मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजनी होगी स्टूडेंट को, तो So उसका कुछ has it not been uploaded? Okay, I'll try and talk today. Okay. First, Just second, tomorrow. okay, I guess we have got 10 minutes, so we can have some doubts session only, or you can ask few questions if you have anything related to Spanish language. Sir, Sir, which Sale and singer do you Star. suggest for songs? Which? Singer do you suggest for songs? ऐसा कोई singer थोड़ी है. You just go and okay. Generally, you can listen to Iglesias is good. Iglesias is pretty good. His although he has got deep meanings, like lyrics has got deep. Simple language थोड़ा सा, मतलब Simple थोड़ा clear language. होता है. What you can do is YouTube पे search करेंगे ना, Spanish songs in basic Spanish ऐसा कुछ for basic students, तो you'll get a and then you can do it. Search अच्छा से करो, search उसमें लिखो ऐसा Spanish songs for basic learners. What do you call, उसको क्या बोलते हैं जब if there's a whole thread of 1 hour के songs, I don't know what do we call that, medley kind of a thing. हाँ, तो उसमें बहुत सारे गाने मिल जाएंगे. Orchestra. medley लिखते हैं शायद. So you will get a lot of songs that एक ही फाइल में मिल जाएंगे. So that you can go through. Means listen. But I'll suggest you more than songs. It's always better if you should listen to the Spanish radio or some news channel जो कि अब ऑनलाइन अवेलेबल है. उसमें थोड़ा बेटर है. अगर ये सब नहीं मिल रहा तो okay, what you can do is you can type live Spanish news on YouTube. You'll find a lot of things. Okay, let me show. Song से easy रहता है कि flow बनता है. हाँ, वो you can repeat 10 n number of times. But Yes, sir. ठीक है, different things different times करो, सब कुछ करो. So what do I say? I'll say live Spanish news. हाँ, तो ये आ रहा है ना, देखो अभी right now RTV is online direct. Let's see. Programa especial desde Barcelona. Okay, so okay, I would want to introduce some cultural part also. So अभी you can stream अभी, अच्छा अभी तो नहीं, पुराना stream है 2019 का. That Catalunya had some issues. BBC का एक अभी है 6 day पुराना Omicron surge. Watch News is live right now. Wait.
हाँ no, this is English. I'll have to check if I have wait, if I have some link that provides all the Spanish radios frequency on them. I'll forward it. I'll have to find. I had it. I have to check where it is. Then you can listen that also. Songs अभी easy वाले ढूंढ लो मिल जाएंगे. Although I'll try and give you a list in the next week. इग्नू में ये सर जैसे किसी को भी सर मेल किसी को सर किसी को भी मेल कर दीजिएगा तो आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप. हाँ अभी इन दिन छुट्टी भी है ना बीच में जैसा. Okay. So any doubts do you have, Chico? नेक्स्ट लेवल करना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? कहाँ से करना है अगर टचवुड यहाँ से सब हो जाता है एग्जाम? Next level कहाँ से करना है? I guess IGNOU had some plans of getting the third and the fourth semester also. Let's see वो कब आता है. First thing. Second, you can there are many places that you can approach. You can go. try Jamia. You can try Jamia. You can try Delhi University. You can try Cervantes. You can try Bharatiya Dhawan. There are a lot of डेली के लिए चले जाओ ना डायरेक्ट जब इतना कुछ